Hello students, welcome to the next lecture of relation and function. In this lecture, we will start with the second exercise of NCERT, and in this lecture, we will be starting the discussion of types of function. I hope you are clear that in the previous exercise, that is in the previous video lectures, I have discussed about types of relations. Now, in this lecture, I will be discussing with you people types of function. But for that, let's revise the concept of function that we have read in class +1. Let's suppose there is a relation R from A to B. Then that relation from A to B is called as function which satisfies the two basic characteristics. The first basic characteristic is that every element of set A should have unique, or you can say one image in set B. We have already read about this in +1 class. We are just revising the things. What was that? A relation, but the point over there, every relation was not called as function. Only that relation was called as function, which is from A to B. When every element of set A have only one image in set B, then that relation was used to be called as function, right? Now considering this, कि ये आपने अपने दिमाग में अच्छी तरीके से +1 में बिठाया हुआ है. If it is not, you can go to the another video lecture of +1 topic relation function, and you can go with the concepts over there. चलिए हम इसके आगे डिफाइन करते हैं. As I said initially, in this lecture, major discussion would be on types of function. Firstly, we are going to discuss about injective function. Injective function means one function. Injective function means one function. Now, if there is a function from A to B, and if for every different element of A, for every different element of A, function f have different image in set B, then it is called as one function. Then it is called as one function. In a simple words, if for different elements of A function f have different image in B, then it is one, otherwise it is many. Let's understand it through a mapping. Suppose A set and B set. A, B, C. 1, 2, and 3. This mapping represent function A have image as 1. Element A have an image as 1. Element B have image as 2. Element C have image as 3. So this mapping is representing one function. But if the mapping would have been like this, A, B, C, and you can see over here, there are two
or more than two elements in set A which have same image in B. So that function would not be called as 1-1 function. If the function is not 1-1, in that case, the function is called as many to one function. In that case, the function is called as many to one. So now please try to understand. You can remember this definition in like this manner also. If from set A to B, there are two or more than two elements which have a same image in set B, then the function would be called as many one. If for every different element from set A, we have a different image in set B, then the function would be called as 1-to-1. Right? 1-to-1, many to one. Many to one. So now ये तो हुआ कि through an arrow diagram or we can say through a mapping we have understood the concept of a function. But the point over there कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं क्या every time we make a mapping? No. We should know an algebraic method, right? So how to check whether the function is 1-1? For that, algebraic method to check for injectivity of a function. Injectivity of a function. What do you mean injectivity? A function characteristics. To be an injective function is called an injectivity of a function, right? So now I need to check what is the algebraic method to check whether the function is injective or not. Let us suppose we have a function from A to B. Let fx1 equals to fx2. For understanding this, firstly, please try to understand through this mapping, I can say that f of A equals to 1, f of B equals to 2, f of C equals to 3. I hope you understand this. Similarly, from this mapping, I can say that f of A equals to 1 and f of B is also equal to 1, whereas f of C equal to 2. Now, देखिए, अगर आप इस पॉइंट को ऐसे भी समझ सकते हैं, सेट ए के एलिमेंट्स जो हैं उनकी इमेजेस है 1, 2 and 3. It means 1, 2 and 3 are representing images. It means function values represent an image. Over here, please try to understand this. What I have written, मैंने माना कि दो images same है. fx represent an image. What I have written over here, let fx1 equals to fx2. It means what? मैंने क्या कंसिडरेशन दी है कि images same है. fx1 वाली image fx2 वाली image के equal है. Now let fx1 equal to fx2. Then from here, solve for x1. आपने क्या करना है? x1 की वैल्यू वैल्यूएट करनी है आपसे. If x1 equals to x2 only, then you conclude that the function is your 1-1 function. But if x1 equal to x2 and x1 have some other value also, then fx is many to one function. जरा लॉजिकली सोच के देखिए मैंने क्या लिखा है. मैंने कहा कि अगर दो फंक्शन की दो इमेजेस सेम है, फिर आपने क्या करना है? सॉल्व करना है, x1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. अगर आपके पास सिर्फ एक ही रिजल्ट आए कि x1 की वैल्यू जो है वो सिर्फ x2 के इक्वल है, तो उसका लॉजिकली मीनिंग सोचिए कि दो इनपुट्स x आर कॉल्ड एज इनपुट्स, fx आर कॉल्ड एज आउटपुट्स, राइट? तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि x1 जब x2 के इक्वल होगा तो ही इमेज सेम है, यानी कि जब इनपुट सेम है तो आउटपुट सेम है. तो ऑब्वियसली एक ही हम क्या कह रहे हैं कि आउटपुट तभी सेम होगी जब सेम इनपुट डालेंगे, तो यानी कि फंक्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1-1 को. बट अगर हम ये कह रहे हैं कि x1 की वैल्यू तो x2 आएगी, ऑब्वियस सी बात है.
अगर x1 और x2 को मैं सेम रखता हूं आंसर तो सेम ही आने वाला है, बट अगर मैं ये कह रहा हूं कि x1 की वैल्यू x2 के अलावा कुछ और भी आ जाती है, तो इसका मतलब क्या बना? इसका मतलब ये बना कि दो डिफरेंट x है, उस केस में भी फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है. It means that the function has to be many one in that case, right? Again, let's इसको और समझने के लिए we go with an example. Let's suppose we have a function from n to n. N to n means natural number to natural number. The function is fx equals to xk. I need to check its injectivity nature, that is whether it is a function, whether the given function is 1 1 or many 1. So the method is let fx1 equals to fx2, right? That is, सोचिए अगर fx x स्केयर के इक्वल है तो fx1 किसके इक्वल होगा? x1 के स्केयर के. सिमिलरली अगर fx x स्केयर के इक्वल है तो fx2 किसके इक्वल होगा? x2 के स्केयर के. तो अब आपने क्या करना है? सॉल्व करके x1 की वैल्यू निकालनी है. तो x1 की वैल्यू क्या आ रही है? Either x1 equals to x2 और x1 equals to minus x2. So it means what? मेरे पास x1 की वैल्यू आई x2 और x1 की वैल्यू आई minus x2. But please focus over here. We have discussed that the function is from natural number to natural number. It means what? The input, that is the value of x, has to be a natural number, and natural numbers are never negative, right? Natural numbers are always positive. So this case is not feasible. Why it is so? सोच के देखिए, ये क्या कह रहा है कि अगर हम ये बोल रहे हैं कि x1 x2 natural numbers हैं, so is it possible that one of the natural number is a negative or another natural number? No, this case is not feasible. It means what? x1 equals to x2 only. It means, इसका मतलब क्या बन गया है कि इस फंक्शन की इमेज तभी सेम होगी जब इनपुट यानी कि x की वैल्यू भी हम एक ही डालें. अगर हमें दो अलग x की वैल्यू डालना है तो आंसर भी दो अलग आएंगे, राइट? So it means what? Therefore the function has to be what? 1 to 1. चलिए, ये तो था अलजेब्रिक मेथड. आप सिंपल वे से भी तो सोच सकते थे. आप सोच के देखिए, 2 डालोगे तो क्या आएगा 4, 3 डालोगे तो क्या आएगा 9, 4 डालोगे तो क्या आएगा 16. तो हर डिफरेंट x पे डिफरेंट इमेज आ रही थी. So that's why the function is 1 1. अब let's suppose another understand this question to another example. Now this time I have changed its domain and codomain. Initially the domain and codomain was set of natural number. Now this time domain and codomain are set of integers. And fx equals to x square again. Now अगर मुझे अब चेक करना हो कि ये फंक्शन 1 1 है कि नहीं है, ऑब्वियसली सेम प्रोसीजर फॉलो होगा, तो कैलकुलेशन भी सेम चलेंगी, तो आंसर भी तो सेम ही आएगा x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2. बट एक जरा यहां पे ऑब्जर्व करें. One of the case says x1 equals to x2, the other case says x1 equals to minus x2. Can I reject this case this time? No. Why? Because our inputs are integers. Integers include both positive as well as negative numbers. So this case is feasible. So it means what? x1 की वैल्यू x2 के अलावा एक और वैल्यू आ गई ना. So it means that the function would not be 1 1. Therefore this function would be many to 1. This function is many 1. आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी चेक कर सकते थे. 2 प्लेस करो, आंसर वुड बी 4. -2 प्लेस करो, even then answer is 4. It means what? दो डिफरेंट x पे सेम आंसर नहीं आ रहा. 2 पे भी आंसर क्या आएगा 4, -2 पे भी आंसर क्या आएगा 4. तो many to 1. So that's why the given function is many 1. अब जरा इस अप्रोच को ऐसे भी समझने की कोशिश करिए कि the nature of the function does not depend only its equation. It depends upon its domain and codomain also, right? Although आप चेक कर सकते हैं दोनों फंक्शन में, दोनों केसेस में इक्वेशन सेम रखी थी, but because of variation in domain and codomain, the nature of the function has been changed, right? चलिए, let's understand this through furthermore examples. Okay, now I have taken another example.
f function is from R to R, fx is equals to mod of x. We need to check its one nature. It is very simple. आप you can judge it orally even rather. -2 डालने पे आंसर क्या आएगा 2, +2 डालने पे आंसर क्या आएगा 2. It means 2 for 2 different values of x, the function has same image. For x equals to 2, answer is 2. For x equals to -2, again answer is 2. So it means the function is many to 1. But what would be the algebraic method? If we go with the algebraic method, it is like that. Let fx1 equals to fx2. Therefore, mod of x1 equal to mod of x2. So what I need to do? I need to calculate the value of x1. So x1 comes out to be plus minus x2. It means either x1 equal to x2. देखिए ये तो होना ही है. x1 equal to x2 तो आएगा नहीं आएगा. वो तो obvious सी बात है ना. दो वैल्यूज सेम डालोगे तो आंसर भी तो इमेज भी तो सेम ही आएंगी. बट यहाँ पे एक और रिजल्ट आया. क्या रिजल्ट आया? x1 equal to minus of x2. Because of this value, the function is many to one function. So I hope अब आपको समझ में आ गया कि फंक्शन 1 और many 1 आप कैसे चेक करते हैं. राइट, लेट्स गो फॉर अनदर टाइप ऑफ फंक्शन. यानी कि अब तक अगर आपने समझा हो तो हमने दो कैटेगरी फंक्शन की 1 if it is not 1 then it is many 1. Same way, now we need to check onto function. Onto function have another name, that is surjective function. Surjective function. Let's suppose there is a function from A to B. If for every element of set B, if for every element of set B there is pre-image in set A, then the function is called as onto function. Let's suppose we have function from A to B, A element, B element, C element. Now please try to understand this. A की इमेज है 1, तो 1 की प्री इमेज है A, चलिए हो तो प्री इमेज. B की इमेज है 2, तो 2 की प्री इमेज क्या होती है B. नाउ मैंने यहां पे क्या डिस्कस किया, कोई ये फंक्शन है फ्रॉम A टू B, तो अगर इफ फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट B के हर एक एलिमेंट के लिए, अगर सेट B के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज है तो फंक्शन ऑन टू है. अगर सेट B का कोई भी एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी प्री इमेज नहीं है तो फंक्शन ऑन टू नहीं है. जैसे कि राइट नाउ सपोज अगर आप चेक करिए सेट बी में यहाँ पे देयर वर 3 एलिमेंट्स 1 2 3. 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग प्री इमेज है, 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग प्री इमेज है, 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग प्री इमेज है. सो दैट्स व्हाई द फंक्शन इज ऑन टू. बट सपोज A B 1 is there, 2 is there, बट अगर सपोज यहाँ पे 3 लगे ऐसा राइट, इस सेट बी में 3 एलिमेंट है जिसकी कोई प्री इमेज ही नहीं है, तो दैट फंक्शन इज नॉट ऑन टू. सो दिस वन, फर्स्ट वन इज एन ऑन टू फंक्शन, अनदर वन इज नॉट ऑन टू फंक्शन. आई होप आप इस मैपिंग के थ्रू तो समझ चुके हैं कि कैसे जज करना है कि फंक्शन ऑन टू है कि नहीं है. अब स्टिल पॉइंट यही है, हर बार मैपिंग फिजिबल नहीं है राइट. अगर हर बार मैपिंग फिजिबल नहीं है तो वी शुड नो अलजेब्रिक मेथड. तो अलजेब्रिक मेथड से हम कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको समझने के लिए एक बार फिर से एक नजर चेक करिएगा. फर्स्टली प्लीज सी टू दिस. इफ आई हैव रिटन अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, देन A is called as domain and B is called as codomain. If I write down a function from A to B, then set A is called as domain and set B is called as codomain. आप लोगों को ये भी याद होगा
कि अगर हमने यहाँ पे ये डोमेन कोडोमेन को मेंशन किया हुआ है, तो फॉर दिस फंक्शन लेट्स से दिस इज योर f1 फंक्शन, दिस इज योर f2 फंक्शन। तो डोमेन कोडोमेन f1 और f2 की तो मैंने सेम लिखी हुई है। अब मैं यहाँ पे रेंज लिख रहा हूं f1 फंक्शन की, रेंज फॉर f1 फंक्शन। प्लीज सी टू दिस, f1 फंक्शन की रेंज है 1 to 3, whereas range of f2 function it is only 1, 2। आई होप आपको रेंज याद होगी। रेंज क्या होता है? इट इज अ सेट रिप्रेजेंटिंग इमेजेस, सेट रिप्रेजेंटिंग इमेजेस। फॉर f1 function 1 to 3 all 3 elements were the images, whereas for f2 function 1 and 2 were the images, 3 were not an image of anyone, right? So that's why 3 was not included in the range of f2। f2 range में 3 was included, f1 की केस में रेंज में 3 was included। Now, as you can see, in f1 function, which is an onto function, here codomain क्या है? B set, और range भी क्या है? B set, isn't it? codomain हमेशा अगर हमने फंक्शन लिखा है तो B set was a codomain। तो इस पर्टिकुलर केस में codomain और range इक्वल थे, बट इस पर्टिकुलर केस में ये set containing 1 and 2, this is your range, and you can see over here range is not equal to codomain। as range is not equal to codomain, therefore the function was not onto, right? और यही हमारा क्राइटेरिया बन जाता है to check a function whether it is onto or not। now onto means subjective। तो आपको क्या करना है? आपके पास सपोज एक फंक्शन दे दिया जाए from a to b, तो a is always your domain and B is always your codomain, right? Now आपको क्या करना है? फर्स्ट स्टेप, फाइंड रेंज। इफ रेंज इक्वल टू codomain, then onto। अगर रेंज codomain के इक्वल है तो onto, if not if not then it is called as into, which is actually means not onto। it means the function, if the function is not onto, it's called as into function, right? so point is this, आपको करना क्या है कि इस फंक्शन में आपके पास दे दिया जाए from a to b, तो आपको उसकी रेंज ढूंढनी। कोडोमेन हमेशा पहले से दी होगी, अगर रेंज और कोडोमेन इक्वल है तो फंक्शन आप ऑन टू डिक्लेयर कर दीजिएगा, अगर कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं है तो आप उस फंक्शन को इनटू डिक्लेयर कर दीजिएगा। अब कैसे? लेट्स सपोज वी गो विद एन एग्जांपल, लेट fx equals to x square and f is from n to n, natural to natural, right? so I need to check now its onto nature, that is surjectivity। surjectivity कैसे चेक करना है? आपके पास मेथड था, मेथड क्या था? आपने क्या करना है? डोमेन आपको पता है, कोडोमेन आपको पता है, व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट इट्स रेंज। क्या आप इस फंक्शन की रेंज ढूंढ सकते हो? देखिए रेंज इनपुट पे भी डिपेंड करती है। इनपुट क्या है? नेचुरल नंबर। तो इसमें आप नेचुरल नंबर प्लेस करोगे, यानी कि x में x की वैल्यू है नेचुरल नंबर प्लेस करोगे, फिर आप उसका स्केयर कैलकुलेट करोगे। जब स्केयर कैलकुलेट करोगे तो आंसर्स क्या आएंगे? अगर आप सोचिए लॉजिकली, जो आंसर्स होंगे वो क्या होंगे आपके पास? वो भी नेचुरल नंबर्स होंगे, बट क्या सारे नेचुरल नंबर्स होंगे? क्या इस फंक्शन का आंसर कभी 3 आ सकता है? फंक्शन का आंसर कभी 3 आ सकता है? सोचिए, इनपुट क्या है? नेचुरल नंबर। कौन सा ऐसा नंबर है जिसको प्लेस करने पे एक्स स्क्वायर का आंसर 3 आएगा? कोई नेचुरल नंबर नहीं। 5 नहीं आ सकता, 6 नहीं आ सकता। यानी कि इस फंक्शन की रेंज क्या है? रेंज है x such that x belongs to natural number and x is a perfect square। तो यानी कि x क्या होना चाहिए?
नेचुरल नंबर होना चाहिए और वो परफेक्ट स्क्वायर नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो यानी कि सारे सेट ऑफ नेचुरल नंबर तो नहीं है, तो इसका मतलब क्या बन के आया आपके पास? इसका मतलब ये बन के आया कि रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। If your range is not equal to codomain, therefore the function is not onto. That means the given function is an into function. That means the given function is an into function. Right? एक और मेथड इसको चेक करिए। जैसे कि मैंने ये कहा कि आप रेंज कैलकुलेट करिए, राइट? बट एज यू कैन सी कि रेंज सीधा सीधा कभी कभार जज नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए हम कैसे कंसेप्ट को फॉलो कर सकते हैं? कंसेप्ट आप ऐसे भी फॉलो कर सकते हैं, लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई। इस फंक्शन को आपने y कंसीडर किया, एफ एक्स है क्या एक्स स्क्वायर, तो यहां से फिर आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास? प्लस माइनस ऑफ रूट वाई, बट नेगेटिव नंबर सॉरी नेचुरल नंबर है इनपुट, तो x हैज टू बी नेचुरल नंबर, तो इसका मतलब x इक्वल टू ओनली प्लस रूट वाई, नेगेटिव नंबर तो नहीं आ सकता। अब जरा आप यहां पे ऐसे सोच के देखिए, इज देयर एनी y फ्रॉम कोडोमेन? क्या कोई ऐसा y है जो आप कोडोमेन से उठाओ और इसमें प्लेस करो और x जो है वो अपनी डोमेन में ना लाई करे? सोच के देखिए इसका मीनिंग फिर से एक मिनट। क्या कोई ऐसा y है, इज देयर एनी y फ्रॉम कोडोमेन फॉर विच x डज नॉट बिलोंग्स टू डोमेन? लेट्स सपोज if I take y as 5, which is a natural number, x is root 5. 5 belong to codomain. 5, y equals to 5 belong to codomain, but for which x जो आया कि root 5 does not belongs to domain. It means what? अब एक जरा इसका वेन डायग्राम सॉरी मैपिंग के थ्रू समझने की कोशिश करके देखिए। अगर मैं ऐसे कुछ यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूं, ये नेचुरल टू नेचुरल है, सपोज मुझे एक एलिमेंट 5 मिला और मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि 5 की इमेज जो प्री इमेज है वो तो इसके अंदर तो लाई नहीं कर रही। तो अगर यानी कि 5 की कोई प्री इमेज इसके अंदर नहीं लाई कर रही है तो फंक्शन क्या हुआ? नॉट ऑन टू। So it means the given function is into. So this is another way of checking whether the function is into or onto. मैं रिपीट कर रहा हूं, एफ एक्स को y के इक्वल पुट करते हैं, फिर वहां से x की वैल्यू निकालते हैं। ऑब्वियसली नेगेटिव वैल्यू तो मुझे रिजेक्ट करनी थी क्योंकि x एक नेचुरल नंबर है। उसके बाद मैंने चेक क्या करना है कि इज देयर एनी y फ्रॉम कोडोमेन? क्या ऐसा कोई y है कोडोमेन में से जिसको प्लेस करने पे x डोमेन में ना लाई करे? अगर ऐसा मिल जाता है तो इसका मतलब क्या बना? इसका मतलब ये बना कि ऐसा एक y है कोडोमेन में जिसकी कोई प्री इमेज नहीं आएगी। अगर कोई प्री इमेज नहीं आएगी तो वो नंबर क्या होगा, वो फंक्शन क्या होगा? वो नॉट ऑन टू होगा, यानी कि इनटू होगा। बट अगर ऐसा होता कि यार कोई ऐसा y नहीं है, यानी कि हर y के कॉरस्पॉन्डिंग इमेज है, तो फंक्शन वो ऑन टू कहलाता है। राइट, दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। सोचिए कि हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया और उसके बेसिस पे क्वेश्चन करने हैं। आपने क्या क्या डिस्कस किया? हमने किया कि फंक्शन की वन वन नेचर चेक करने का मेथड क्या है, एज वेल एज फंक्शन की ऑन टू नेचर चेक करने का मेथड क्या है। राइट, सो प्लीज इन कंसेप्ट को एक बार ढंग से समझिए, रिवाइज करिए 2 टाइम 3 टाइम्स, फिर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। राइट, दैट्स इट फॉर टुडे।